Hello everyone, welcome back to my channel Political Science YT. So today we will be starting with Unit 4, which basically consists of two topics: demand for new international economic order and global terrorism. So in this video we will be talking about new international economic order, that is NIEO. When did it emerge? What led to it? What were the circumstances? What exactly its principles and meaning are? So in this video we will be covering NIEO. And also I have uploaded already unit 1 to 3 on this channel. If you are new to my channel, please visit that playlist. It will be a great help for you as well as for me. And also please keep supporting my channel, liking the video, sharing it with your friends. So let's get started with NIEO. न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर का मतलब होता है टू मेक द इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम फेयर, जस्ट और इक्विटेबल. जैसे कि हमें पता है कि एक साइड होती है डेवलपिंग कंट्रीज, सेकेंड साइड है डेवलप्ड कंट्री. सो जो डेवलपिंग कंट्रीज है दे ट्राई टू एक्सप्लॉइट द डेवलपिंग कंट्रीज. और ये जो इकोनॉमिक सिस्टम होता है एट द इंटरनेशनल लेवल, इट इज़ नॉट एट ऑल फेयर, अनइक्विटेबल होता है, अनजस्ट होता है. सो NIEO का मेन मोटिव होता है टू मेक द इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम फेयर, जस्ट एंड इक्विटेबल. सो अब थोड़ा हम सिनेरियो समझ लेते हैं कि कैसे हमने लिंक करना है इसको. सो आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, many countries of Asia, Africa and Latin America, they became independent and wide disparities prevailed between developed and underdeveloped countries. सो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो कंट्रीज़ थी एशिया, अफ्रीका और अमेरिका की, वो इंडिपेंडेंट हो गई थी और बहुत सारी डिस्पैरिटीज़ प्रिवेल कर रही थी बिटवीन डेवलप्ड एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़. जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थी दे वर डिमांडिंग फॉर जस्ट इकोनॉमिक रिलेशंस, एंड ऑल्सो वो चेंज करना चाहती थी इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस लाइक IMF, UN, वर्ल्ड बैंक, विच हैड एन हेजेमनी ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज़. डेवलप्ड कंट्रीज़ का इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर ज़्यादा मतलब कंट्रोल और इन्फ्लुएंस था. जो NIEO है, इट बेसिकली रेफर्स टू द सेट ऑफ प्रपोजल्स टू एंड द एग्जिस्टिंग इम्बैलेंस इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम. जैसे कि मैंने बताया कि इट्स मेन मोटिव इज़ टू मेक इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम फेयर, जस्ट एंड इक्विटेबल. इसका एक ऑब्जेक्टिव होता है टू बेसिकली अडॉप्ट अ कोड ऑफ कंडक्ट for the developed countries and also to make the international economic system just, fair, equitable and honorable, just as I said before. NIEO demands were ending of the existing monopolistic control of the developed countries over international trade, economic institutions and technology. As developed countries हैं वो अपना ही influence रखती हैं over the international economic system. So it basically demands were ending that monopolistic control. Monopolistic का यहाँ पे मीनिंग है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ का दबदबा होना ओवर इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम. देन डिमांड है टू एंड न्यू फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, दैट इज़ न्यू कलोनियलिज्म. न्यू कलोनियलिज्म का मतलब होता है कि जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं वो अभी भी हेल्प ले रही हैं फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज़, एंड द डेवलप्ड कंट्रीज़ आर इन रिटर्न दे आर सीकिंग देयर ओन प्रॉफिट एंड आर exploiting them. So this is new colonialism, that is a new form of colonialism. Adoption मतलब कब हुआ था, कौन ये, this is important. It is basically a set of proposals which is put forward by the developing countries. Very, very important. Developing countries. Don't get confused with developed and developing. Through United Nations Conference on Trade and Development. Very important. In 1972, UNCTAD published a report towards a new trade policy for development, and it proposed to reform in global trading system. Adoption of NIEO was done by UN General Assembly on 1st of May 1974. NIEO is basically an important platform for discussing the demands of NAM, G77, UN, UNCTAD, GATT, WTO, North-South Dialogue, South-South Dialogue. Then you can mention these definitions in your answers as well in your paper. According to Fidel Castro, NIEO is a means to challenge the Western economic dominance, advocating for greater control over resources by the developing nations. Then according to Raul Prebisch,
NIEO means reorientation of the international economic system to ensure that less developed nations they are favored, aiming for a more equitable distribution of wealth. Then comes the basic principles or the recommendations of NIEO. इसमें जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं इसके वो है कि फुल परमानेंट सोवरेनिटी रखना ऑफ एवरी स्टेट, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस टू द डेवलपिंग स्टेट्स, रेगुलेशन और सुपरविजन रखना ओवर द एक्टिविटीज़ ऑफ द MNCs, जस्ट एंड इक्विटेबल रिलेशनशिप प्रमोट करना, सस्टेनेबल ग्रोथ ऑफ इकोनॉमीज़ करना, एंड ऑल्सो नीड टू पुट एन एंड टू द वेस्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. Then comes the causes of emergence of NIEO, widening gap between the countries of the north and south. नॉर्थ कंट्रीज़ हैं उनके पास ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है एंड दे हैव कंट्रोल ओवर इंटरनेशनल ट्रेड इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी. इन UNCTAD and GATT they have failed to control this ever growing gap, and this basically had led to the emergence of NIEO. जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं दे डेफर फ्रॉम अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, एनर्जी यूज़ ऑफ रिसोर्सेज एंड कंट्रोल ओवर इनकम. So this basically led to the wide gap between the northern and the southern countries. Then comes the less role of South in increasing global independence. Developed countries they have purchased the raw materials and they sold the manufactured goods to the developing countries. So underdeveloped countries हैं they are getting the developed techniques, economic assistance जो already developed countries हैं उनसे. So जो developing countries हैं जो developed countries हैं they are becoming rich day by day. उसके बाद है न्यू कॉलोनियल कंट्रोल ऑफ नॉर्थ ओवर साउथ. एज वी नो कि नॉर्थ कंसिस्ट ऑफ द कंट्रीज हु आर ऑलरेडी डेवलप्ड और साउथ में डेवलपिंग है. सो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं दैट इज़ द नॉर्दर्न कंट्रीज दे आर इंडिपेंडेंट ओनली पोलिटिकली बिकॉज ऑफ द सिकासिटी ऑफ गुड्स इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज. और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो कंट्रोल कर रहे हैं इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग थ्रू फॉरेन एड, मिलिट्री एंड इकोनॉमिक एड. उसके बाद एक्सेसिव एंड वन साइडेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वर्ल्ड्स इनकम एंड रिसोर्सेज बाय द डेवलप्ड कंट्रीज. कि वन साइडेड एक्सप्लॉयटेशन हो रही है बाय द डेवलप्ड कंट्रीज ओवर द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द पुअर कंट्रीज. हेजेमनी ऑफ द MNCs. डेवलप्ड कंट्रीज हैं जिन्हें उन्होंने इस्टेब्लिश करी है इन अननेसेसरी एंड अनरीजनेबल कंट्रोल ओवर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज थ्रू द MNCs. और जो MNCs हैं दे contribute about 50% over the production. Then comes the dissatisfaction with the working of international economic order. International trade and tariff system है it is basically in favor of the rich developed countries, and underdeveloped countries होती हैं जो they are forced to sell their raw materials at a competitive lower price, and it basically leads to conditional loan from IMF. उसके बाद है इनएडिक्वेसी ऑफ GATT एंड WTO. जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको फोर्स किया जाता है टू चेंज द लेबर लॉज, कॉपीराइट रूल्स एंड ऑल्सो एंड ऑफ द एग्रीकल्चरल सब्सिडीज़. सो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं दे स्ट्रेंथन देयर न्यू कॉलोनियल कंट्रोल ओवर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़. इनइक्वालिटी और इनएफिशिएंसी प्रिवेल होती है. एज वी नो कि मेन मोटिव ही उनको अनफेयर और अनजस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम को ख़त्म करना ही मेन मोटिव है ना ही होगा. सो इनइक्वालिटी और इनएफिशिएंसी तो होती ही है इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम इन विच द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं ਜਿਹੜੀਆਂ दे आर inefficient to use the rich and natural resources. Then comes the policy of divide and rule. जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं they divide the state into ordinary state, favored state and most favored state. Ordinary states में rigid conditions लगाते हैं. favored states में enjoy करते हैं वो natural trade relations who developing countries. Most favored states में they get all types of help from the developed country. Who get help? Developing countries. Then comes the political shift. Geopolitical changes होते हैं like the decolonization process और इमर्जेंस हो रहे हैं न्यू इंडिपेंडेंट डेवलपिंग नेशंस. दे हैव इन्फ्लुएंस्ड द डिमांड फॉर अ मोर इक्विटेबल ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर. जैसे जैसे ज़्यादा कंट्रीज़ डेवलप हो रही हैं तो एक
कॉन्शियसनेस डेवलप होती है कि हम भी डेवलप हुए एंड डिमांड फॉर अ मोर इक्विटेबल ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर. उसके बाद ग्लोबल इकोनॉमिक पावर इम्बैलेंस, as concentration of economic power is basically in the hands of the developed nations, and it is already contributing to an unjust economic order. So there is a need for NIEO. Then oil crisis in the 1970s. Oil crisis था जो 1970s का, it was basically marked by OPEC countries, oil petroleum exporting countries, or it basically underscored the vulnerability of many developing nations. और इन्होंने मतलब डिमांड करा था फॉर मोर इक्विटेबल इकोनॉमिक ऑर्डर, क्योंकि जो ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस होते हैं वो मेनली डेवलप्ड कंट्रीज़ में होते हैं. सो दे हैव टू डिपेंड, डेवलपिंग कंट्रीज हैव टू डिपेंड ऑन द डेवलप्ड कंट्रीज, एंड डेवलप्ड कंट्रीज दे ओनली प्रोवाइड ऑयल टू द डेवलपिंग नेशंस इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉफिट इन सेलिंग दैट ऑयल. उसके बाद है ट्रेड इम्बैलेंसेस, लाइक द डेवलपिंग नेशंस दे फेस द अनफेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड विद द प्राइजेस ऑफ देयर एक्सपोर्ट्स. ट्रेड इम्बैलेंस होती है, लाइक डेवलपिंग नेशंस में अनफेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड होती है एज़ कम्पेयर टू द डेवलप्ड नेशंस. Then comes the demands or the foundational principles of of NIEO. So this is basically important. This is generally asked in exam also, that what are the demands of the foundational principle of NIEO. So this basically includes the restructuring of the present day world economic relations, need of institutional change, end of protectionism, transfer of technology, transfer of capital resources, control over the hegemony of MNCs, recognize करना and protect करना the interest of the underdeveloped countries, self reliance को promote करना, greater और fixed share in international trade और export करना, then fix the minimum standard and income of the people, to check on the environmental pollution, check on the blind use of the natural resources by the developed nations. Special attention towards the agricultural development, so that the developing countries also have a chance to send something to the developed countries. Also participation in decision making should be done. Issues which were raised in the demand for NIEO, as there was economic inequality between the north and southern countries. Unfair trade practices were there. There was debt and finance of the developing countries by the developed nations. Then resource exploitation of the developed nations of developing countries. Technology transfer, market access, agricultural subsidies, institutional reforms. So these all were the issues which were raised in the demands for NIEO. So that's it for this video. If you like this video, don't forget to hit that like button for more such content, and also don't forget to share this video with your friends, because it takes a lot of hard work to make this video. So please support this channel. Thank you so much for turning in, and thank you so much for your time. Thank you.